welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 and the name of the chapter is Subtraction. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं subtraction के बारे में, right? So let's see how first of all this subtraction is related to our real life, right? So they say help Riddhi and Kunal to complete the subtraction puzzle by filling in the missing numbers. तो हमें रिद्धि और कुणाल को हेल्प करना है ताकि हम इस सब्ट्रैक्शन पजल को कंप्लीट कर सकें और जो मिसिंग नंबर्स हैं उन्हें वहां पर लिख सकें, राइट? सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सो इट इज 126 माइनस 11. तो अगर हम 126 में से 11 को माइनस करते हैं तो वी गेट 115, right? Then 115 minus 15, we get 100, right? Then 126 minus 30. So 126 में से अगर हम 30 को माइनस करेंगे so it would be 6 and 96, right? Then 115 minus 15 is equal to 100. अब ये इक्वेशन पूरी हो गई कि 125 minus 100 is equal to 25, right? Then 175 minus what? That we get 25. So we'll minus 150, right? Then 150 minus 15, we get 135. Then 135 minus 55 is equal to, so इसको माइनस करके देखते हैं, 135 minus 55. So it is 0 and 13 minus 5 is equal to 8, right? So we get the answer 80. Correct? So this is how we solve the puzzle. Correct? Now, next, subtraction of 3-digit numbers. अब सीखते हैं कि कैसे हम subtraction कर सकते हैं 3-digit numbers का. So, they say without regrouping. जब हम regrouping नहीं करें तब. So it is while subtracting members, we first write them such that ones come below ones, tens below tens and so on. तो जब हम subtract करते हैं numbers को तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि जितने भी ones place पर digits हैं वो सभी ones के नीचे आए, tens place पर digit हैं वो tens के नीचे आए and so on, right? तो example है subtract 323 from 586 कि हमें 586 में से 323 को subtract करना है. तो it says we start from 1, तो हम 1 से शुरू करते हैं, just like this, ones, tens and then hundreds. So 6 minus 3 is 3, 8 minus 2 is 6, 5 minus 3 is 2, right? Now moving ahead, we have the exercise which says subtract the following. तो अगर हम इन्हें subtract करते हैं, so we get 829 minus 705. Already these numbers are arranged in the column. So let's subtract them. 9 minus 5 is 4. 2 minus 0 is 2. And 8 minus 7 is 1. Clear? Then moving ahead to the next topic which is with regrouping. जब हम regrouping के साथ subtract करते हैं then example दिया है subtract 216 from 424, right? So तब भी हम 1 से ही शुरू करेंगे. It's like this, 424 minus 216. So it says 14 minus 6. We can't subtract 6 from 4. So we'll take a carry. 14 minus 6 is 8. Then we'll write 1 over here after cutting 2. Then 1 minus 1 is 0.
Then 4 minus 2 is 2. So it is 208. Right? Next, write 8 at ones place. Now subtract. Okay, so these are the steps that we have followed. Right? Now we have some common errors जो हम usually कर देते हैं. What are they? They say always remember to subtract that borrowed tens, hundreds and thousand digits from their respective places. कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम जो ये borrowed वाले वो होते हैं numbers, हम इन्हें यहाँ पर लिखते नहीं है, right? But we always have to remember to write them, right? We don't have to follow these mistakes. Clear? Now we have the exercise which says subtract the following. So it is already the numbers are arranged in the columns. So it is 8 minus 3 is 5. Then 0 minus 7. We can't subtract 7 from 0. So let's take one carry over here. So it becomes 10 and then it is 5. 10 minus 7 is 3 and 5 minus 2 is 3. Clear? Then next topic, which is subtraction of 4-digit number with regrouping or borrowing. Right? कि अगर हम subtraction कर रहे हैं 4-digit numbers का regrouping और borrowing के बिना. So how it is done? This is subtract. Example है subtract 3324 from 6498. So 1 से start करेंगे, right? Obviously numbers को पहले columns में arrange करके, then we will start 8 minus 4 is 4, 9 minus 2 is 7, 4 minus 3 is 1 and 6 minus 3 is 3. Clear? Then next thing we need to identify. So it says subtract the following. अब जल्दी से इन्हें minus करते हैं, right? So the numbers are arranged in the columns itself. Let's see. So it is 8 minus 4 is 4, 9 minus 4 is 5, 6 minus 5 is 1 and 4 minus 3 is also 1. Correct? Moving ahead, now the next topic, which is with regrouping or borrowing. Regrouping के साथ और borrowing के साथ अब हम कैसे sum solve करते हैं, let's find out. So this subtract 2793 from 9642. तो हम 1 से ही start करते हैं, right? Always. So 9642 and 2793 arranged in the columns. Now let's see how they are done. So this 12. So 2 में से 3 हम नहीं minus कर सकते हैं. So we borrow 1 from here. Then it becomes 12. And after 4 it becomes 3. Then we can't subtract 9 from 3. Again we borrow 1 from here. And it becomes 5. Then 5 में से 7 again we can't subtract. So we again took a borrow. Then this 9 becomes 8 over here. Correct? So now 12 minus 3 is 9. 13 minus 9 is 4. 15 minus 7 is 8. And 8 minus 2 is 6. Clear? So this is how we have got the answer, that 9,642 minus 2,793 is 6,849. Correct? Then moving ahead, we have been given some questions in the exercise which says to subtract them, and we can see the numbers are already arranged in the columns. So 12 minus 4 is 8, then 8 over here. 8 minus 5 is 3. 3 में से 6 हम नहीं minus कर सकते, we'll borrow 1 and then 7 over here. 13 minus 6 is 7
and then 0, right? So 738 is our answer. Then moving ahead, we have some subtraction facts. तो जल्दी से बात करते हैं इनके बारे में. So it is when we subtract 0 from a number, we get the number itself. कि जब हम 0 को subtract करते हैं किसी नंबर में से तो हमें वही नंबर आंसर मिलता है. करेक्ट. एग्जाम्पल 4290 minus 0 is equal to 4290. When we subtract a number from the same number, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर में से दोबारा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द आंसर इज ऑलवेज 0. तब हमें हमेशा आंसर 0 ही मिलता है. जैसे कि एग्जाम्पल है 2983 minus 2983 is equal to 0. करेक्ट. When we subtract 1 from a number, then the answer is the predecessor of the given number. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर में से 1 को तो जो आंसर होता है वो ऑब्वियसली उस नंबर का प्रेडेसर होता है, यानी कि द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल है 8432 minus 1 is equal to 8431. क्लियर. नेक्स्ट, टू फाइंड मिसिंग नंबर्स इन एन ऑपरेशन. एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट इज डन. So example 5, fill in the missing numbers. So अब हमें missing numbers पता लगाने हैं. How we can do it? We can see कि यहाँ पर कुछ blocks बने हुए हैं जिसमें कोई भी number नहीं है. We simply have to find out these numbers. So we cannot subtract 4 ones from 2 ones, right? So we borrow 1 10 from 5 tens leaving 4 there. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बोरो कर लेंगे और यहाँ पर 4 छोड़ देंगे. करेक्ट. तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, 12 minus 4 is 8. करेक्ट. अब 4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 3. तो वी राइट 1 over here because if we subtract 1 from 4 we get the answer 3. Then what should we subtract? From what should we subtract 2 that we get 5? So the answer is 7. Correct. And then 8 में से हम क्या subtract करेंगे, आंसर 4 आ जाए. So it is 4. Clear? So in this way we can we can find out the missing numbers. Correct? So here we have a point to remember. Let's see what it says. So it is always start from ones then move to tens. हमें हमेशा 1 से ही शुरू करना है, उसके बाद tens और hundreds और बाकी thousands कॉलम तक जाना है while subtracting numbers, जब भी हम numbers को subtract कर रहे हों, right? Then we have one exercise which says fill-ups. So it has some fill-ups which says 2490 minus 0. Obviously the number itself is the answer, 2940. Correct. Then taking the last one, 5983 minus 1, 5982. Right, that is also the predecessor of the given number. Then we have let's take 11th part, right? So it is 0 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाए, ऑब्वियसली 0. देन 0 में से 2 तो नहीं जा सकते हैं. वी बोरोड 1 फ्रॉम हेयर एंड वी wrote 7 over here. 10 minus 2 is 8. Then 7 minus 4 is 3. So we got the missing numbers in this operation, right? That was all about the exercise. Now next we have estimating difference. अब हम difference कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. So it says estimating means guessing a number which is closest to the exact answer. तो estimating का मतलब होता है एक नंबर guess करना जो कि exact answer के बहुत ज़्यादा पास हो. To estimate the difference
राउंड ऑफ द नंबर्स, कि अगर हमें डिफरेंस एस्टिमेट करना है तो हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 या फिर हंड्रेड्स, और तब उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? सो इट सेज let us estimate the difference between 856 and 366 by rounding off to the nearest tens. Correct? So step 1 में हम इन्हें राउंड ऑफ करेंगे 10 से पहले, राइट? तो 856 को हम 10 से राउंड ऑफ करेंगे, सो इट विल बी रिटन एज 860, एंड 366 को राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी रिटन एज 370. अब हमें 860 में से 370 को माइनस करना है एंड द आंसर इज 490, राइट? सो ये किया हमने एस्टिमेशन. अब दे से फाइंड द estimate the difference by rounding off each number to the nearest tens. अब tens से हमें इन्हें राउंड ऑफ करना है. लेट्स सी हाउ वी कैन डू. सो इट इज 612 and 385. 612 को अगर 10 से राउंड ऑफ करें तो हमें मिलेगा 610. 385 को राउंड ऑफ करें तो हमें मिलेगा 390. करेक्ट? सो अब 610 में से 390 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, देन 11 minus 9 is 2, then 5 minus 3 is 2, and the estimated answer is 220. Clear? Then next topic that we have is solve the word problems. अब हमें word problem solve करनी है, so how we can do it? Let's find out. We have example. There were 473 students in class 3 of a school. कि इतने बच्चे थे एक थर्ड क्लास में एक स्कूल में. Out of them 461 passed and were promoted to the next class. इतने पास हो चुके थे और बाकी और सभी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किए जा चुके थे. How many students did not get promoted? कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली प्रमोट ही नहीं किए गए, राइट? सो इट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड. ये है 473 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट प्रमोटेड, जो पास हुए वो थे 461. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट गॉट प्रमोटेड, जो प्रमोट नहीं हो पाए उसके लिए हमें माइनस करना होगा. 3 minus 1 is 2, 7 minus 6 is 1, and then 4 minus 4 is 0. So हमें आंसर मिला 12. The 12 students did not got promotion in the next class. Clear? So moving up to the exercise, it says you had 1961 balls. You gave 321 to your friend. How many balls are left with you? The number of balls you have, number of balls you have is equal to 1961, and number of balls you gave to your friend is 321. Correct? सो 1961 में से हम 321 को माइनस कर देंगे. सो 1 minus 1 is 0, 6 minus 2 is 4, 9 minus 3 is 6, and 1 is 1, right? So how many balls were left with you? 1640, right? Now moving up to the chapter at glance, let's see what it says. So it is subtraction means to take away something from a group or number of things. कि subtraction का मतलब होता है numbers ले लेना एक ग्रुप में से या फिर किसी भी thing में से, right? Minuend is the bigger number. Minuend होता है जो एक दो numbers के बीच में जो बड़ा number होता है उसे कहते हैं minuend. From which the smaller number is subtracted, जिसमें से हम छोटा वाला number subtract करते हैं. Subtrahend is the smaller number which is subtracted. जो छोटा नंबर होता है जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे कहते हैं subtrahend.
Difference is the answer we get after subtracting the smaller number from the bigger number. तो difference है जो आंसर हमें मिलता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइन्यूएंड में से सबट्राहेंड को, राइट? उसे कहा जाता है डिफरेंस. क्लियर? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.